हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। सो आज का टॉपिक है फीटल डेवलपमेंट। जो प्रीनेटल डेवलपमेंट मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसके बारे में मैंने आपको जर्मिनल स्टेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, देन एम्ब्रियोनिक स्टेज, और आज जो है वो लास्ट स्टेज है फीटल डेवलपमेंट। इसमें मैं आपको जो है वो मंथ बाय मंथ जो बेबी का, जो फीटस का जो डेवलपमेंट होती है इनसाइड द मदर वूम और यूट्रस, उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो फीटल जो डेवलपमेंट होती है हमारे पास, वो फीटस हम बोल सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ्स या 8 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है अप टू 9 मंथ तक। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ मेरे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, बट जो डे टू डे जो हमारे जो लाइफ्स हैं उसमें भी हमारे फैमिली में कोई ना कोई जो है वो इस पीरियड से जो है वो गुजरता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, सो दैट वो अपना और अपने जो फीटस का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसको अच्छे से स्टडी कर सकें, उसके बारे में जान सकें, सो दैट वो केयर कर सकें अपनी और अपने फीटस की, सो दैट दे कैन गेट अ हेल्दी आउटकम आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट सुने ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फीटल डेवलपमेंट इन द प्रीनेटल डेवलपमेंट। स्टार्ट विद द टॉपिक प्रीनेटल डेवलपमेंट, fetal period. As I explained in my previous videos regarding the germinal period development and embryonic development, now start with the fetal development. In about 2 months, the size of the fetus is 3 centimeter. During the second month, most of the major organ systems form. Limb buds develop, limbs distinct with the fingers and toes, bones begin to form. Eyes far apart, the embryo becomes a fetus by the 7th week. All organ systems are formed by the end of the 8th week. Activities of the fetus are growth and organ specialization is there. A stage of tremendous growth and change in appearance is seen during this stage of the fetal development. Beginning of the 8th week, the sexually neutral fetus activates gene pathway for sex determination, forming testes in XY fetuses and ovaries in XX fetuses. External genitalia develop. During the 3rd month after the conception, fetus is about 3 inches long. It becomes more active by moving its arms and legs, opens and closes its mouth and moves its head. The genitals can now be identified as male or female. The following features are distinguished, such as face, forehead, eyelids, nose, chin, upper and lower arms, hands, lower limbs. Near about 4th month, the size of the fetus near about 18 centimeter. Head enlarged, face has human features. The fetus increases in size during this trimester and bony parts of the skeletal begin to form. Fetal movements can be felt by the mother. Near about 5th month, 20 weeks, fetus is about 12 inches long. Structure of the skin have formed. Fetus is more active. And around 6th month, fetus is about 14 inches long. Eyes and eyelids are completely formed. Fine layers of hair covers the head. Grasping reflex present and irregular movements occur. Near about 7 month, about 40 centimeter is the fetus, and during this trimester, the fetus increases in size. Circulatory and respiratory systems mature in the preparation for the air breathing. Fetal growth during this time uses large parts of its mother's protein and calcium intake. Maternal antibodies pass to the fetus during the last month, conferring the temporary immunity. By the 8th month, fetus has little room for the large movements क्योंकि बच्चे का साइज इंक्रीज हो चुका है, and during this month a layer of fat is added that will assist with the temperature regulation. The lungs, however, still remain immature during this stage. If born at this time, the infant will likely require some help with the breathing. It is usually not until the 9th month that the lungs are mature enough to regulate breathing without assistance. At 9 months, about 50 centimeter, and the fat under the skin, smooth wrinkles were formed, nails on the fingers and toes completely formed, baby at the term. So this is the overall review of this topic, prenatal development.
start with the fertilization to the growth of the fetus from the first day of the conception to the 9th month of the fetal growth. So this is all regarding the prenatal development with the 3 stages of the development, germinal, embryonic, जो मैंने previous video lectures में आपको बताया, और आज fetal development. So I hope आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, प्रीनेटल डेवलपमेंट विद द 3 डिफरेंट स्टेजेस. अगर ऐसे ही पीडियाट्रिक नर्सिंग के टॉपिक आप और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसएस पीडियाट्रिक्स. थैंक यू.